जय श्री राम। वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू भारत मार्ग। हमारा साथ हैं प्रीति तक्कर जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, एंड विनय जी हैं। सबके लिए सुस्वागतम, वो दोनों के लिए। और दोस्तों, आज बहुत गहरी सब्जेक्ट होने वाला है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कनाडा, पाकिस्तान ऑफ द वेस्ट। ओके, गून्स रन फ्री। मैं कुछ ऐसा वीडियोस भी दिखाऊंगा आपको, ये जानने के लिए कि कैसा है इधर लाइफस्टाइल। और हम बात करेंगे विनय जी के साथ टू बिगिन विथ, एंड देन वी विल गो टू प्रीति जी। ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। एक मिनट, ओके, I just went out and came back, and looks like ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਪਣਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ। Yeah. Anyway, so we are going to discuss about some of the interesting things in Canada, what is happening, and more. And before going further, friends, please make sure to like the video, comment on the video, share the video with as many people as you can, friends. You know, it's um, we need your help in reaching out to the people. And also, friends, if you didn't if you didn't subscribe the channel yet, please do subscribe. And also press the notification bell to stay connected. And also, we do a lot of our trips are happening, and we will be mentioning in the coming videos and coming time. You will be informed. You can stay connected to us with through the Bharat Marg WhatsApp number +1 647 964 4790, and please do support us with all possible ways. All the information are given here, okay? And also we send out one dharmic message. You can get it by sending a WhatsApp, okay? Vinay ji, welcome. Preeti ji, welcome. Vinay ji, let's get started here, okay? I just want to it's very shocking. I'm going to show you a video, okay, on lawlessness, how lawlessness is in Canada, okay? And this is happening in threat to a temple, okay? See here, the Lakshmi Narayan temple. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ you see here, the person is openly threatening. ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ means he is saying the coming Sunday. You saw the thing here, right? I'm just going to take off the video audio so that people can see it, see it, because that subtitle is there. They can see it. Vinay ji, law and order, Pakistan of the West, goons running free. Please take off. Aap kya bolenge? There's a lot to say, actually. I'm not even sure where to begin. So there was a threat just about a couple of weeks ago, if I recall, from Mr. Pannun, who is who claims himself to be the counsel for Sikhs for Justice, which is a Canadian Khalistani terrorist organization. And this man openly threatened that on November 19th, Sunday, I don't know why they pick Sunday all the time. Maybe World Cup. It was targeted. Yeah, but also Sunday, even this other guy, Lakshmi Narayan Mandir guy, said Sunday. I don't know. Maybe they work Monday to Saturday, plumbing jobs and other things like Nijja, right? So that's probably the reason they are busy. And I understand, actually. I'm also a working man, so I empathize with them. And Sundays, they basically think that they have the free time and they can plant bombs on Air India. And they also said that they're going to plant bombs in the Ahmedabad cricket stadium yesterday when the World Cup was going on. And I'm not sure. I did not hear anything about any Air India flights getting bombed or anything happening in the cricket stadium in Ahmedabad. But again, you can elaborate on that if you have heard anything. So I'm not sure if these are all
wild threats, like these guys are on a wild west fantasy land or something. So they keep threatening, and they keep doing all of this, but in reality, actually, if you also look at what happened last week, when Diwali celebrations were going on at one of the places in Brampton, they pelted stones against the Hindus, the crowd that was celebrating Diwali peacefully, and and they have done a lot of damage in the last few years, actually, I should say, desecrating Hindu temples, bringing down flags, and openly threatening. They were in possession of guns, like the guy on the first video that you showed. He said, we have automatic weapons, and even the police cannot do anything to us because they are afraid of us. And even intelligence agencies, they are looking for anything around us, but they can't find any evidence or whatever. ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਰੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ AK-47 ਬਸੂਕਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਆਪੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ I'm not surprised that they ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ that these guys have openly claimed that they have AK-47, because Ninja in one of the videos actually showed shooting AK-47. ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਘਰੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ AK-47 ਬਸੂਕਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਆਪੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਡੋਲ ਦਾਂਗੇ ਸਕੁਆਡ ਰੋਡ ਤੇ and the irony is, he says, you think we need the Canadian government all day every day ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ Canada is a rule of law country. That is something of the utmost and foundational importance in a country. ये अपना प्रधानमंत्री Importance. And you know what, the Khalistani terrorists, the Canadian Khalistani terrorists, they have the guts to actually say all of this because the government, the prime minister himself is supporting them. So who cares? Like, if the prime minister himself is supporting the terrorist organizations in the name of freedom of speech, freedom of expression, then there's not much that you can do about the whole thing. So yeah, you're right. India, Canada is going the Pakistan way, and India, India is just watching the whole circus, I should say, and Canada is basically becoming one of the, like a Pakistan or a Syria or one of those crime-prone countries in the West. Absolutely, Vinay ji, Priti ji. It's not only about this is Goons are like one of the aspects of it, okay? But you see, you hear. I'll show you this picture for you to see. This is the Canadian Prime Minister who says Canada is a law of the land, okay? Just for your information, ye dekhiega, the protest was happening in Canada, okay? From the river to the sea, Palestine will be free. Okay, that means eradicate Israel. And to say this, the congresswoman in US was censured for that. She was punished for it. Congresswoman Rashid Tlaib, I guess her name is. She was punished. But here in Canada, you can say it, and these guys propagate it, like Jagmeet Singh or Justin Trudeau. These guys propagate it. Okay, आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? ये सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये है, ये नहीं कि सिर्फ हम खालिस्तानी जो कनाडा टेररिस्ट है उनके बारे में सिर्फ हम बात नहीं कर रहे हैं. मतलब इधर तरह तरह का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सबके लिए इधर बढ़ावा होता है. इसमें मैं दो बातें कहना चाहूंगी. एक तो कनाडा में कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ टेररिज्म भी है.
ठीक है, कनाडा में सिर्फ ये 2 चीजें थोड़ी है, फ्रीडम ऑफ टेररिज्म भी तो अलाउड है ना कनाडा में। यही तो हमारे जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं, राइट? तो ये हो गया फ्रीडम ऑफ टेररिज्म, एंड दिस पीपल आर टेकिंग द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ दैट फ्रीडम ऑफ टेररिज्म, और कर रहे हैं जो करना है, और गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। और अगर ये जो जिस हिसाब से क्लेम कर रहे हैं कि पुलिस भी उनसे डरती है, तो फिर तो अगर पुलिस ही अगर डर रही है तो आर्मी उतारो। कनाडा में आर्मी है कि नहीं है? फिर एक दूसरी बात, नहीं, वो सिर्फ फ्रीडम रैलीज वाले के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है। मैं वही कह रही हूँ कि ये फ्रीडम ऑफ टेररिज्म दे के रखी हुई है, इसलिए ये हो रहा है। और दूसरा, एक मोदी जी का जो बहुत फेमस नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो ट्रूडो भी उसी को यूज कर रहा है, सबका साथ सबका विकास, यानी कि टेररिज्म का भी विकास करो। सबका साथ दो यानी कि टेररिज्म का साथ दो, सबका विकास करो यानी टेररिज्म का भी विकास करो। यही बात, मतलब ये क्या बेवकूफी भरी बातें हैं जो हम सुन रहे हैं और एक्चुअली देख रहे हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा कंसर्निंग चीजें हैं। ये कैनेडियन गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस चीज से ये आग से खेल रहे हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट को पता नहीं है कि वो लोग आग से खेल रहे हैं, और जब आप आग से खेलते हो ना, तो चाहे बुझाने जाओ चाहे जलाने जाओ, जलने का डर आप ही को रहता है, किसी और को जलने का डर नहीं रहता। आप जल जाओगे इस खेल में, और जलाने वाले आपको ऐसे जलाएंगे कि समझ में भी नहीं आएगा कि कब जला दिया। बहुत डरने की जरूरत है। ये बिल्कुल ये चीजों को रोकने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो याद रखो कनाडा वालों, कनाडा बर्बाद हो जाएगा, और उसकी बर्बादी के जिम्मेदार वो सभी पॉलिटिशियंस होंगे जो इस तरह की चीजों को आज सपोर्ट कर रहे हैं। और जनता भी how about voters होना चाहिए, आम जनता how about voters जो वोट देते हैं उनका क्या हाल है? सिर्फ पॉलिटिशियन जिम्मेदार है क्या? नहीं, सभी वोट देने वाले को भी सोचना पड़ेगा। इस तरह से आप ऐसी गवर्नमेंट को कैसे ला सकते हो जो बंदा खुले आम इस तरह के टेररिज्म को अलाउ करता है? प्रीति जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि ये इसके बारे में मैं और विनय जी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आई वुड आस्क यू द सेकंड क्वेश्चन ऑन दैट रिगार्ड। ये देखिए, ये खुला बोलता है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर के ऊपर हम उधर जाके प्रोटेस्ट करेंगे और उधर दंगा करेंगे, वही इसका मतलब है। ओके, you see this one, and he says we will protest and this thing. मगर जब Justin Trudeau is able to send people to protect Senegal, Justin Trudeau is able to protect Jewish schools, Justin Trudeau is able to protect mosque, masjid, but when it is coming from to a non-Abrahamic faith, you are not even a human. No, you have to specifically say that coming to Hinduism specifically, हमें वो non-Abrahamic वो वाली चीजें चाहिए नहीं. Be very specific about it. When it comes to Hinduism, when it comes to Sanatana Dharma, that's when Justin Trudeau and his government runs away and they don't want to do anything. वो सारी दुनिया को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, दुनिया के धर्मों को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, यहाँ तक कि पैलेस्टाइन वालों को भी किसी तरह से प्रोटेक्शन ही दिया हुआ है यहाँ पे। हालांकि दिखाने के लिए तो ये लोग इजराइल के साथ हैं, लेकिन वो भी कर रहे हैं, तो सबको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। सिर्फ when it comes to Hinduism and Hindus, this government fails to give any kind of protection. Forget about the protection, but एक छोटा सा एश्योरेंस भी नहीं दे सकते। प्रोटेक्शन तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है प्रोटेक्शन देना, एक छोटा सा एश्योरेंस भी नहीं दे सकते कि आपके साथ ऐसा कुछ हम आगे नहीं होने देंगे। चलो आज हो गया ठीक है, आगे नहीं होने देगा, इतना छोटा सा एश्योरेंस भी ये गवर्नमेंट नहीं दे सकती है when it comes to Hinduism, when it comes to Sanatana Dharma, and that is the real racism. That is the actual racism every Hindu Sanatani is facing in this country called Canada. Okay, so Vinay ji, what you will say? His own MPP is Chandra Arya has tweeted against this, but anybody listen? उनका आवाज कोई सुनता भी है क्या?
No, unfortunately, Yeah, he is a lucky you know, man. He is not getting kicked out like Ramesh Sangha in Brampton. no. The thing is, you also have to keep in mind that you know what he has got a huge voice in Ottawa, in that part of where he is representing the riding, right? So so Chandra Arya actually commands a lot of clout in that particular area, and so basically, yes, it is one voice pretty much right now, because I've not heard from any other MP, And there was one especially a more liberal voice MP. who was kicked out, Ramesh Sangha. Yeah, especially a liberal MP who actually is openly, he's not saying anything about the liberal government or Justin Trudeau. All he's saying is action has to be taken against these Khalistanis. Okay, but what he probably might have forgotten or might have missed is that Justin Trudeau is hand in glove with the Khalistani terrorists. Okay, sorry, Canadian Khalistani terrorists. So last week, Khalistan. So basically, he tweeted on X. So last week, Khalistan supporters verbally abused a Sikh family outside a Sikh Gurudwara. Actually, if you see that video, there's a second video there where a Sikh person is walking into the Gurudwara with an older man, maybe his father. And this gentleman here who is shouting Khalistan slogans, he actually went to assault the guy, saying that you're not allowed into the Gurudwara because you're not a Khalistani supporter. So what does that say? I mean, I have told you this on your show time and again that not all Sikhs are Khalistani supporters. Okay, there's a very small segment of the society that is actually, supporting this Khalistani movement and whatever, right? So, but the majority of the Sikhs who live in Canada, they are not supporters of Khalistan. They just want to live a peaceful life and that's move on with their, stuff. So that's basically what he was saying. How can you assault a Sikh person if you call yourself a true Sikh? How can you assault another Sikh person, right? And then the same Khalistani group, Yeah. Before 1984, they used to eat in the homes. I was in Punjab. Okay, जहां मैं बहुत सारा recording कर रहा था. These guys used to rob Hindu families and go and store it in Sikh family homes and eat in their home and then rape their own woman from the home where they ate. That is where all Sikh girls. yeah, उधर का exactly. बहू बहन ये सब चुप रहे क्योंकि इनके पास तो इतना हथियार था इनके पास. They had ultimate weapons compared to the Indian army. These are all, it's not new. No, this is not new. Absolutely. I mean, amount of abuse and amount of attacks, amount of killings that these Khalistanis have committed in Punjab when during the 1980s when the Khalistan movement was going on in India, right? So it's deplorable. Actually, it's unbelievable. What is happening in Palestine is nothing actually. What compared to what happened in Punjab. But you say me. मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा फिर यही सवाल लेके प्रीति जी के पास जाऊंगा. ओके, ये हैं see just before Justin Trudeau, we all here for quite some time. Justin Trudeau before when you see a Sikh, you saw them as a brother or sister. There was not this kind of enmity or interfaith problems before that. Do you agree with me on that? Yeah. This has been fueled and means what happened? What changed? No, this divisiveness, right, basically has become rampant, I should say. I'm comparing the time between Stephen Harper versus Justin That's what Trudeau. I'm saying. The divisiveness that has become so rampant has only kind of is come out mostly into the open only after Justin Trudeau took over office. Okay, during the Stephen Harper era,
even with the Muslims, right? Even with the Sikhs or any other community, there was no divisiveness. Now, what this man is doing is what what happens in a third world country. Basically, you kind of you divide people to kind of capture votes. So you're creating divide people, promote hate, and try to harvest the vote. Exactly. Exactly. That's so true. Yeah. 100%. प्रीति जी, it means, do you agree? आप तो इधर बहुत साल हो रह चुके होंगे. Means I used to have so many friends. I used to go and do business with so many Sikh families, and they used to do things with me. Now there is so much of tightness between both the communities and anybody for that matter. Please, do you agree? Disagree? नहीं, बिल्कुल. ये जो जिस तरह से अभी हो रहा है, ये इस तरह से तो पहले कभी था ही नहीं. स्टीफन हार्पर के समय में कभी भी मुझे नहीं लगता कि किसी भी हिंदू को इस तरह का कोई डर लगा हो किसी सिख से. कभी भी नहीं. ये चीजें बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट थी, राइट. लेकिन ये हो क्या रहा है कि ये डिवाइड एंड रूल वाला जो एक लॉ है ना, जो ब्रिटिशरों ने पूरी दुनिया में फैलाया था, this man is following this Justin Trudeau. He is simply following that rule, divide and rule. उसको ये है कि मैं हिंदुइज्म को इस तरह से ऑपोज करूंगा, ये टू गेट सपोर्ट फ्रॉम खालिस्तानी टू रन माय गवर्नमेंट. उसके पास और कोई चारा नहीं. ये जो वो जस्टिन ट्रूडो इज लाइक अ पपेट एट द मोमेंट. वो जैसे ही खिलाएंगे खालिस्तान वाले जगमीत सिंह वगैरह इसको, he is playing that way. He doesn't have a choice. वो अपना कुछ बोल नहीं सकता. एक बात. तो दूसरी बात, बहुत सारी ऐसी अदर चीज भी है जो जस्टिन ट्रूडो को ऐसा करने नहीं देगी, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो कोई दूध का दूल्हा थोड़ी है. वो खुद दूध का दूल्हा तो है नहीं. तो इसलिए दूसरी भी चीजें बहुत सारी आप भी जानते हो, फाइनेंसेस में और बहुत सारे एलिगेशंस उसके ऊपर लगे हुए, केसेस भी चल रहे हैं उसको, राइट. तो वो कोई दूध का दूल्हा हुआ नहीं है. जो बंदा खुद इस तरह से करप्शन वगैरह में लगा हुआ हो, तो फिर वो तो कुछ भी कर सकते हैं. उसके लिए कंट्री कोई फर्क नहीं पड़ता. कंट्री जाए बाढ़ में, हिंदू जाए बाढ़ में, मुस्लिम जाए बाढ़ में, सब जाए बाढ़ में. वो एंड में वो ये भी कहेगा कि खालिस्तानी भी जाए बाढ़ में, बस मुझे कुछ नहीं होना चाहिए. वो दोस्त अपना दोस्त है, किसी और का दोस्त नहीं है. इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो सिर्फ अपना बड़ा क्या है वही देखने वाले होते हैं, वो किसी के दोस्त नहीं होते. वो सिर्फ कोई बेनिफिट ले लेंगे बस, और कुछ नहीं. बिल्कुल. विनय जी, आई विल कम टू द फाइनल क्वेश्चन फॉर यू, बोथ ऑफ यू. आई विल स्टार्ट विथ यू, क्योंकि ये बहुत गहरी क्वेश्चन है. आप मुझे बता दें कि सी हियर common man or woman has no voice in Canada. आप मानेंगे तो अग्री करो, नहीं तो यू डिसएग्री एंड टॉक अबाउट इट. ओके, लॉलेसनेस के बारे में हम बात करते हैं. जैसा अगर स्कार्बरो की तरफ जाते हैं तो बहुत सारा तमिलियन होते हैं, श्रीलंकन का, मगर उनका कोई आवाज नहीं है. जो एलटीटी सपोर्टर हैं उनके लिए आवाज है. ओके, दे गेट द प्राइम स्पॉट. जैसा इधर सिख के लिए आवाज नहीं है, खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं, जो कैनेडियन टेररिस्ट हैं, उनके लिए आवाज है. और I am sure if you go to the Muslim community, the same thing. साधारण मुस्लिम के लिए कोई आवाज नहीं है. जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है उनके लिए आवाज है. क्या बोलते हैं आप? ऐसा मींस ओनली एक्सट्रीमिस्ट गेट्स टू रूल कनाडा. ये सही है, गलत है? आप दोनों जवाब दीजिए. Again, I don't have statistics to say anything on that particular thing, because it all depends on you got to look at the history and see, okay, is this true, what the statement that you're making, right? But I'll make a pretty general comment on this. My feeling is that I'm not sure why the so-called terrorist organizations or people who are standing behind these terrorists are given a voice, whereas the normal people are not given a voice. Again, I'm not sure. But the thing is, the misconception, I should say, or the misperception of the Liberal government under Justin Trudeau is that basically they think
that if 5 people in raise their voice about Khalistan, the entire liberal government under Justin Trudeau assumes or thinks that the entire population, the 2.1% population of Sikhs in Canada, are behind this Khalistan movement. Same thing, they've not done their study, or they've not done their investigation through Five Eyes or whatever it is. But unfortunately, this is their perception. And same thing with the Muslims, right? They're seeing a small group of people protesting against, Israel and their, anti-Semitism and all that stuff. You're seeing it, right? So the government actually is assuming that about, whatever the Muslim population is about 4.3 or 4.4% in Canada. So the entire population of Muslims are behind this, are all anti-Semitists. Okay, that is their perception, and unfortunately, it's not true. You got to do your homework, your statistics, and get the facts right. Now, as a result of this, Mr. Trudeau is losing his popularity day by day, minute by minute. Okay, his popularity has come down to almost 20%. Okay, and it's soon going to be in the teens. So, and probably in single digits eventually. So he is not. He doesn't know. This is the problem. Inexperienced guy. What else can Thank I you. say? Priti ji, your last word. So, as I said earlier, there is a freedom of terrorism in this country. तो जो फ्रिंज एलिमेंट है उनको खुली छूट है, फ्रिंज एलिमेंट को यहाँ खुली छूट है कि भाई तुम्हें जो करना है करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यही है, ये ओपनली सबको इस तरह से दिया है और वो उसे पता है। मैं नहीं मानती कि उसे नहीं पता है कि 2.1% सिक्स जो है वो सभी खालिस्तानी सपोर्टर नहीं है। जस्टिन ट्रूडो नहीं जानता, ये मैं नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि उसे ये सब पता है, but on pretext of that I do not know or I don't have this knowledge, he is allowing all these games to be played. मुझे लगता है कि वो सब जानता है, ऐसा नहीं है। वो चाहे बिल्कुल नया है, इनएक्सपीरियंस्ड है पॉलिटिक्स में, उसका कोई ज्यादा विजन भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीजें तो अपीयरेंट है। क्योंकि अपीयरेंटली देखो ना, कितने हिंदू मंदिरों में सिख लोग जाते हैं, कोई सिख कितने मंदिरों में जाके देखो, कितने सिख भाई आपको मिलेंगे वहां। मंदिर में बात कर रही हूँ मैं, गुरुद्वारा की बात नहीं कर रही हूँ। मंदिरों में दर्शन करने के लिए कितने सिख लोग आते हैं। अभी दिवाली के फंक्शन में देख लो, कितने मंदिरों में सिख लोग आए हुए थे दर्शन करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को पता नहीं है, गवर्नमेंट को ये पता भी है, लेकिन उनका ये है कि भाई ये फ्रीडम ऑफ टेररिज्म अलाउ करो। उसको मैंने जैसे पहले भी बताया, उसका सिर्फ एक ही गोल है कि मुझे पीएम बना रहना है, पीरियड। उसके आगे ना वो कुछ देखता है ना पीछे देखता है, उसका कुछ भी नहीं। और दूसरा वो एक जो है ना, वो करप्शन का उसके ऊपर जो चार्ज है, वो करप्शन का चार्ज भी रहेगा उसके ऊपर, क्योंकि वो खुद एक करप्टेड पर्सन है। ऐसा तो केस वैसे ही उसके ऊपर चल रहा है। वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, राइट? सो अगर वो देखो केस किसके ऊपर चलता है, करप्शन का केस ऐसे ही लोगों के ऊपर चलता है ना जो कुछ करते हैं, उनके ऊपर तो करप्शन का केस चलता नहीं है। तो मुझे लगता है 100% ये चीजें हैं कि ही इज डूइंग एवरीथिंग नोइंगली, इग्नोरेंटली वो नहीं कर रहा, एंड ही डजंट केयर फॉर एनीबॉडी एल्स बिकॉज ही डजंट केयर फॉर द कंट्री कॉल्ड कैनेडा। आप 8 साल पहले देखो ना, 8 साल पहले कनाडा जहां था और अभी 8 साल में जहां आके खड़ा रहा है कनाडा, आप देख लो व्हाट इज द डिफरेंस। कहां से कहां लाके रख दिया। जो ऊपर जा रहा था, कनाडा वाज गोइंग अप, वो अब नीचे आ रहा है। और हर 6 मिनट में एक कार चोरी होती है। एक रिपोर्ट अभी मैंने न्यूज में पढ़ी है, एवरी 6 मिनट देयर इज अ कार स्टोलन इन दिस कंट्री। देन नाउ हाउ इज दैट पॉसिबल? हर 6 मिनट में कार चोरी तो शायद पाकिस्तान में भी नहीं होती होगी। पाकिस्तान में किया तो पेट्रोल नहीं मिलती है। नहीं, पेट्रोल की बात जाने दो ना, पर इधर का
कार की चोरी जाने तो मैं तो कहती हूँ कि वो गधे है ना उनके पास, गधों की चोरी भी नहीं होती होगी हर 6 मिनट में, वहां तो गधे बहुत, राइट? इसकी भी चोरी नहीं होती होगी हर 6 मिनट। ये गधा को जेल में लगा दिए अभी, तो ये किधर भाग न जाए। कनाडा की हम क्या ही बात करें, मतलब कनाडा जैसे कंट्री में कोई सोच भी सकता है कि every 6th minute there is a car stolen? Come on, what a joke you have made out of Canada, what a joke. एंड मैं तो कहती हूँ कि आगे की जनरेशन सोचेगी कि इस कनाडा में रहें, यहाँ से चले जाए। मैं ऑलरेडी बताऊं, यहाँ से लास्ट ईयर 60,000 Canadians have left this country and there are more to be leaving, more people are planning to leave। नए लोग जो यंगस्टर्स यहाँ पे आए हैं वो लोग कनाडा छोड़ के जा रहे हैं, 2 साल 3 साल जिनके जो पीआर पे आए हैं या जिनका पीआर ऑलरेडी हो चुका है, वैसे लोग जा रहे हैं। तो कोई वजह तो होगी ना, क्यों ऐसे इस तरह के लोग जो कि काफी चीजें, मतलब अपना देश छोड़ के किसी और देश में जाने का डिसीजन इजी नहीं होता है किसी के लिए, फिर भी वो डिसीजन लेके आए, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, बहुत सारी चीजें उनकी ऑन स्टेक लगा के वो लोग आए हैं। वो लोग जब कनाडा छोड़ के जा रहे हैं, 60,000 लास्ट ईयर गए एंड दिस ईयर आल्सो अ बिगर नंबर इज गोइंग बैक। व्हाई? बिकॉज़ कनाडा इज गोइंग डाउन, कनाडा अब नहीं जा रहा है अभी। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये जो करंट गवर्नमेंट है उसी की है, उसी ने कनाडा को ऊपर से नीचे लाया है। तो नेचुरल सी बात है, ये सारी चीजों का इम्पैक्ट होगा। एंड आई होप कि जस्टिन ट्रूडो जाग जाए, वो नहीं जागेगा तो फिर लोग उसे जगाएंगे 2024 के इलेक्शन। Thank you, Priti ji. I'll give my last word. Okay, there is a big confusion. Okay, there is a big confusion. There is a big confusion between the public and the Prime Minister of Canada. That is, Prime Minister of Canada सोचते हैं कि हमने नफरत इतना नहीं फैलाए इसलिए हमारा पोल नंबर नीचे जा रहा है बोल के वो और ज्यादा नफरत करने का कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों के बीच और नफरत फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। मगर लोग सोच रहे हैं कि इनका पोल, इनको भी नफरत इनका ऊपर इतना होता है इसलिए कि ये नफरत फैला करते हैं। You know, he is sowing the hate and people don't like it. That's why his poll number is going down. Whereas I think the Canadian Prime Minister is thinking he is not promoting hate enough. That's why his poll number is going down, and he's keep on promoting the hate more and more is my thought. But what do you think? You please let us know. Vinay ji, Priti ji, thank you very much for coming and sharing what is total chaos in the housing market. Jayesh Barambat ji bolte hain, market as far as affordability is concerned, high interest rate kill, yeah, many businesses, yeah, bilkul sahi. And guess what, that prompts many youngsters coming in. We did a video on it, many youngsters coming in and they don't have job, and all they can do is, they have to fulfill their hunger. They are going on and stealing. I'm not justifying stealing, but we had to figure out. But anyway, thank you, friends. Please make sure to comment, share. What do you think? Do you agree with Vinay ji? Do you agree with Priti ji? Do let us know in the comment area, and we will love to see you again in the next video. Till then, Jai Sri Ram, Jai Sri Ram. Bahut Aabhar. जय श्री राम।